Hello everyone, welcome to Vision Classes. I am your teacher Dhanraj sir. This is Vision Classes, All India online classes for CBSE, ICSE and Maharashtra State Board students for class 8, class 9th and class 10. We have started this series of lectures for class 10 students, and that is also for particularly maths and science subject. Okay, now we are going through the a linear equation in two variable, and this is a last part actually. अर्लियर जो पार्ट में कवर हुआ है वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स वगैरह मैंने प्रोवाइड किया हुआ है. जस्ट गो थ्रू इट एज वेल एंड आई होप आपको अच्छे लगे तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना. ओके, देन विल जस्ट गो थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस linear equations. Okay, and even earlier part में हम लोगों ने examples cover किए हुए हैं. Okay, apart from this. Okay, now we'll just go through this problem. Two types of boxes A and B are placed in a truck having capacity of 10 tons. Okay, 10 ton का एक means capacity है truck का. Okay, truck का capacity है. Now 1 ton is equal to, now we'll just read it first and then we'll write down whatever given things. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, weights 10 ton means 150 box of type A, 100 type B lead to the 100 tons. But when 260 tons or is 260 boxes of type A are loaded in a truck, can still accommodate the 40 boxes of type B, so it is fully loaded. Find the weight of each type of boxes. Just see here. Okay, what is given is there just 10 tons, right? Full capacity of truck जो कि ट्रक कैरी कर सकता है. Now 1 ton is equal to, I hope you know, it is 1000 kg. Okay, so 10 ton is equal to 10,000 kg, right? Now what is first condition? Okay, before moving ahead, just even box type A, box of type A, box type A, let consider them as a X, and boxes of type B consider them as a Y. Okay, here just let box type A X and box type B Y. Now first condition, what is first condition here is that 150 types of boxes of type A means X plus 100 B means Y is equal to 10,000. Okay, now here observe this equation. यहाँ पे each number you can divide by commonly 50. So here divide by 50 से divide करना. So 53 is a 150, 3x plus यहाँ पे 100 divided by 50 means here 2y is equal to this 50 divide करना, ये 0 cancel, then 200. Okay, so it will be 200. This is equation 1. Then second condition, what is second condition given? Second condition is that when 260 boxes of type A means 260 X plus, it can still accommodate the 40 boxes of means 40 Y is equal to again 10,000. Again 10,000. Okay, here just divide by 20. Okay, so divide
क्योंकि ऑब्जर्व किया तो आपको जस्ट ये कॉमन डिवाइडर हियर 20 आता है, सो डिवाइड 20 से डिवाइड किया तो इट्स अ 0 कैंसिल आउट, देन 2 1 2 2 3 6 मीन्स इट्स अ 13x प्लस 2y is equal to 20 here, 2 and then 500, right? So this will be the second equation. Now observe equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2 ऑब्जर्व किया तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे y कोएफिशिएंट है जो कि सेम है, 2 and 2 है, राइट? सो यू हैव टू जस्ट इन दिस केस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2. Subtract equation 1 from equation 2 से subtract करना. equation 2 है 13x plus 2y is equal to 500 minus 3x plus 2y is equal to 200. ओके, यहाँ पे अगेन साइन चेंजेस हो रहा है, राइट? साइन चेंजेस क्या क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, राइट? एंड दिस विल बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जा रहा है, राइट? 2y गेट कैंसिल, 3x माइनस 13x minus 3x, it will be 10x is equal to 300. So your x will be 30, right? Okay, ये 0 cancel out हो रहा है, so x will be 30. Okay, means box type A will be 30, right? Weight of actually box A will be 30. Then next thing, you have to just put this x, value of x in any equation. Let's say equation 1 में put करना, put value of x in equation 1, equation 1 में put करना, 3x plus 2y is equal to 200. Then 3 into 30 plus 2y is equal to 200. So 90 plus 2y is equal to 200. Okay, 2y is equal to 200 minus 90, 2y is equal to 110. So y will be 55, because 2 ones are 2, 2 5s are 10, 2 5s are 10. Y will be 55. So finally our solution is just write down like this: weight of box, the weight of box of type A is equal to 30 kg, that is x, right? And the weight of box of type B is equal to 55 kg. Okay, मीन्स यहाँ पे जस्ट आपको कंडीशन 1 कंडीशन 2 से जस्ट इक्वेशन ऑब्टेन करना है, एंड you have to solve the linear equation in 2 variable. Okay, fine. Now we'll just move towards next example, that is very interesting one. Numerator and denominator का example means fraction. Okay, now we'll just read it. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Okay, denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Numerator become 12 times the, now denominator becomes 12 times the numerator. If both numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction. Okay, now firstly हमें just a fraction consider करना है, x by y. Okay, so let numerator
numerator of a fraction or numerator bx consider करना, then denominator by, okay, so fraction क्या आ रहा है, fraction x by y, right? So first condition given is that, first condition, denominator of a fraction means denominator, see denominator is y, right? Y 4 more than twice the numerator, means twice means 2x plus 4 आ रहा है, right? So take this 2x to the left hand side or take this 4 to the left hand side and y to the right hand side, means यहाँ पे 2x minus y is equal to negative 4 is a first equation मिल रहा है. Then second condition क्या है, देखो second condition यहाँ पे denominator becomes 12 times numerator, denominator becomes 12 times numerator if numerator and denominator both reduced by 6, means यहाँ पे y minus 6 it's a denominator is equal to x minus 6 is a numerator and denominator is 12 times the numerator, okay, 12 times the numerator. Now here just you have to simplify these equations. Y minus 6 is equal to 12x minus 12x minus 72, 12 6 the 72. Now take this y to the right hand side and 72 to the left hand side, means यहाँ पे just simplify करना, 12x minus y is equal to 72 minus 6. So your second equation will be 12x minus y is equal to 66 will be the second equation. Now observe two equations, okay, again observe करना, यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट -1 आ रहा है and y here नेगेटिव आ रहा है, मीन्स y के कोएफिशिएंट सेम है, okay. Our simple method यहाँ पे just subtract करना क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम है, right? Subtract equation 1 from equation 2, okay, equation 1 from equation 2 से subtract करना, equation 2 क्या है, 12x minus y is equal to 66, then 2x minus y is equal to -4. So subtract करना है, अगेन यहाँ पे साइन चेंजेस होने वाला है बहुत सारे, सो प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस माइनस, okay, minus minus minus, okay. Now solve the equation. 12x minus 2x will be 10x, then this term will cancel out because no, here actually minus minus plus हो रहा है, okay, plus, हाँ, okay, plus हो रहा है, sorry. यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो हियर minus y plus y 0, okay, then 66 plus 4 it will be 70, so x will be 70 divided by 10, so x is 7. Put in any equation, let's say equation 1 में put करना, okay, put value of x in equation 1 में पुट करना, 2x minus y is equal to -4, 2 into 7 minus y is equal to -4, so 14 negative y is equal to -4 minus 14, so minus 18
positive. So this will be the y means यहाँ पे न्यूमरेटर आ रहा है. So fraction, our solution at the end part, fraction will be numerator x by y क्या है 7/18 will be the answer. ओके सिंपल है एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है. फर्स्टली हमें जस्ट फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है उससे इक्वेशन फॉर्म करना है एंड सेकेंड कंडीशन दिया होता है उसी के बेसिस पे सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करना है एंड वही सॉल्व करना है. ओके नाउ नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट एग्जाम्पल. This is again a very interesting one. See here what is given. Out of, okay, ये last example होगा and आपको ये वीडियो सीरीज एंड लेक्चर्स वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो जस्ट आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल विजन क्लासेस. ओके हम लोग ये पूरा सीरीज कंप्लीट करने वाला है. नाउ आउट ऑफ 1900 किलोमीटर we shall travel the some distance by bus and some distance by aeroplane. ओके ये विशाल जी है जो भी ये बस से ट्रैवल कर रहा है, एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है, राइट. हमें पता नहीं है कितना डिस्टेंस उन्होंने बस से ट्रैवल किया है एंड एरोप्लेन से ट्रैवल किया है. सो लेट्स फाइंड आउट दिस थिंग. ओके नाउ बस ट्रैवल with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Okay, complete the journey. Find the distance we shall traveled by bus. Okay, यहाँ पे simply conceptual part है हमारा जो बोट and water stream के example में use किया था. Time is constant. Time is equal to distance upon speed. Distance upon speed. So this use this formula here. Even we have to use here. Okay. Now see here. Firstly, consider distance traveled by bus. X or just x. X be the distance traveled by bus. ओके बस से ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस है x एंड y will be the distance traveled by aeroplane. Now here the according to first condition what is given is that x plus y is equal to 1900 kilometer, right. This is first condition actually. Now second condition given is that means just time required to cover x distance. ये x distance, this is distance in kilometer, right. Okay, so time हमें just time for x distance by bus is just we'll write down here time required to cover x distance by bus. Time required by bus is equal to x by speed कितना है 60 km per hour, right. So time again here time required by aeroplane कितना है y by 700. okay, y by 700. now this is in hour, right. so what is condition given is that he covers this distance in 5 hour में cover करता है, right. second condition means this time x by 60 plus
y by 700 is equal to 5r में कवर करता है. सो जस्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ओके, सो 700x प्लस 60y is equal to, और 60 into 700 is equal to 5. So take this 60 into 700 to the right hand side, means 700 x plus 60y is equal to 5 into 60 into 700 यहाँ पे just divide by 10 से डिवाइड करना. ओके, सो यहाँ पे 700 को 10 से डिवाइड किया तो इट विल बी 70x प्लस 6y is equal to 5 6 30 and 7 3 21. So it will be the 21,000. okay, 21,000 हो रहा है. ओके, मैंने बहुत सारे प्रोसीजर यहाँ पे इकट्ठे किया हुआ है. जस्ट ये फर्स्टली 10 से डिवाइड करना, ये 0 गायब हो जाएगा. ओके, सो 5 6 30, 300 इंटू 70 करना. ओके, 370 किया तो यू विल गेट द 21,000. नाउ दिस इज a second equation. Okay, observe this first equation and second equation. यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 6 है and यहाँ पे 1 है. So just multiply equation 1, multiply equation 1 by 6 से multiply करना. So 6x plus 6y is equal to 1900 into 6. So 0 0 54 carry 5, 6 1 is 6 plus 5 is 11. So 11,400. This will be the third equation. ये third equation हो रहा है, right? देखो यहाँ पे nextly दिस इज थर्ड इक्वेशन हो रहा है, राइट? देखो यहाँ पे अगेन कोएफिशिएंट सेम हो रहा है, राइट? नाउ इन दिस केस जस्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना. 70x plus 6y is equal to 21,000. Here minus 6x plus 6y here is equal to 11,400. So यहाँ पे just again साइन चेंजेस हो रहा है. साइन चेंजेस क्या हो रहा है देखना यहाँ पे. पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, राइट? देखो यहाँ पे 70x minus 6x will be 64x. Here this part term will be cancel out because 6y minus 6y will be 0, right? It will be equal to 0 0 then 6 and then 20 minus 11 will be 9. Okay, so x will be 9600 divided by 64. Okay, 64 1 is 64. यहाँ पे डायरेक्टली करना और सिंप्लीफाई करना ये पूरा. 8 8 is 64. Okay, then 8 1 is 8, 8 2 is 16, 0, right? Then 8 1 is 8 and then 8 5 is 40. Okay, so your answer will be 150. x आ रहा है यहाँ पे 150. so put in any equation, let's say equation 1 में put करना x की value, you will get the, और just हमें find the distance विशाल traveled by bus. बस से ही just हमें find out करना है. so विशाल traveled distance by bus is equal to
150 kilometer. Okay, just write down. Solution here will be the distance traveled, distance Vishal traveled by bus is 150 kilometer. For 150 kilometer, this is of last answer actually. Okay, and I hope वीडियो अच्छा लगा होगा. ओके, एंड जस्ट सब्सक्राइब करना, शेयर करना. दैट्स इट ऑल. बाय बाय.